आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें से एक प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम, सिस्टम इस तरह से है, एक मास बी एक मास ए, दोनों को इस हर जगह स्ट्रिंग से टाइट किया गया है एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मास वेट ऑफ ए, राइट। सो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, that is W and that is equal to mg. What should be the weight of this so that the whole system is in equilibrium, and this is the string, the breaking strength of this is 175 Newton, right? इतना breaking strength means इससे ज्यादा फोर्स अगर इस पर लगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। So maximum force is this with which this can withstand. ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितना सहन कर सकता है तो वह 175 न्यूटन। सो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए अपने को पता है कि अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई टोटल फोर्स जो है नेट फोर्स इज 0। सपोज दिस पॉइंट इज सी। सो अगर हम देखते हैं तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा T1, इस पॉइंट पर भी आपको कनेक्टेड है, इस डायरेक्शन में T1 लगेगा। सपोज इस डायरेक्शन में T2 है, यहां से ये T2 लगेगा। इस डायरेक्शन में T3, इस पॉइंट पर यहां पर T3, राइट। इस डायरेक्शन में T4, इस डायरेक्शन में T4। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैक्सिमम इज 175 न्यूटन। It means T4 is equal to 175 Newton, maximum force ले सकते हैं, right? Therefore T4 is equal to 175 Newton। एक चीज क्लियर हो गई, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमने इसका ले लिया है हमारा मैक्सिमम। अब हमको क्या निकालना है, W निकालना है। सो FBD ऑफ A हम देखेंगे क्या है, FBD ऑफ A। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वेट टुवर्ड्स द सेंटर, T1 अपवर्ड। तो हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सो दिस इज W एंड दिस इज T1। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू W, राइट। सिंस अपने को वेट निकालना है तो W एंड W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अपने को W निकालना है, डायरेक्टली mg का वैल्यू निकालना है। तो FBD में व्हाट डिड वी गेट, T1 इज इक्वल टू W। अब बाय पॉइंट C इसका FBD बनाएंगे, ठीक है। सो FBD एट C। अब यहां पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, दिस फोर्स T2, डाउनवर्ड फोर्स एंड इस डायरेक्शन में T3 लग रहा है। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस। सो अब इसका रेजोल्यूशन करेंगे। इसका डायरेक्शन जो है ये जो है इससे 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम इसको रिजॉल्व करेंगे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक ये और एक ये, वाई एक्सिस। इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस इसको सिलेक्ट करेंगे। इधर हम एक्सिस जो लेते हैं एक्स एंड वाई, इट इज आवर चॉइस, हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वी कैन चूज एनी। तो हम नॉर्मली वो डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं वेयर एक एक्सिस उस डायरेक्शन में रहना चाहिए जहां पर मैक्सिमम फोर्सेस आर एक्टिंग, सो दैट रेजोल्यूशन विल बी मिनिमम, राइट। एक फोर्स उस डायरेक्शन, एक एक्सिस लेते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस काम करते हैं। और नॉर्मली अगर स्ट्रिंग वगैरह केस रहता है तो एक एक्सिस हम अलोंग द स्ट्रिंग लेते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रेजोल्यूशन जब हम करेंगे, दिस पॉइंट इज दैट इज C। इसका रेजोल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, T2 cos 37 डिग्री इन दिस डायरेक्शन T2। अब रेजोल्यूशन हो गया, सो सिग्मा fx एंड सिग्मा fy निकालेंगे। अब एक कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पर कि भाई सिग्मा fx is equal to 0 and sigma fy is equal to 0. This is the condition of equilibrium. तभी देखा जाए, sigma fx is equal to 0, right? This implies
T2 sine cos 37 in this direction. Therefore, T2 cos 37 degree in this direction. T3 is in this direction. तो minus T that is equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 37, तो हम बार बार ये बनाते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि if it is 37 degree, then this is 3, this is 4 and this is 5. This is standard angle I have taken so that numerically there won't be any problem. So therefore T2 cos 37, if you look at 4 by 5 minus T, this is T3. T3 is equal to 0. Therefore T3 is equal to 4 T2 by 5. एक रिलेशन अपने को T3 एंड T2 में ये मिल गया. अब y के डायरेक्शन में देखेंगे. Now sigma Fy is equal to 0. What does it say? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में T2 sin 37, that is T2 sin 37 degree minus T1 is equal to 0. Therefore T2 into sin 37 is 3 by 5 minus T1 that is equal to 0. Therefore T2 is equal to 5 T1 by 3. अब T2 का वैल्यू क्या आ गया? 5 T1 by 3 and T1 is W. So we can put the value. Therefore it is 5 W by 3. तो T2 का वैल्यू मालूम हो गया. T2 is equal to 5 W by 3. T2 is known and T1 is known in terms of W because finally we want W. So T3 का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, right? सपोज हम 1 लिख देते हैं. Therefore from 1 T3 is equal to 4 by 5 into T2. T2 is 5 by 3. W, so 5 will go. Therefore T3 is equal to 4W by 3. So this way we got T1, T2 and T3 in terms of W and T4 is known. T4 is equal to 175. अब हम क्या करेंगे? B का FBD बना लेंगे. FBD of B. ठीक है? And then we will find the value of magnitude of W. Because numerical value T4 is known, so there should be some relation between T3 and T4. On the basis of that, we can find the value of W. Now we will make FBD of B. So FBD of B, right? So see what are the forces acting at B. This is B. In this direction, T3 is acting. In this direction, T4 is acting. And here downward, that is mg is acting, and upward, suppose this normal reaction is n. So I will say this is mg, and in this direction this is n. So if you select axis as this is x and this is y, right, then resolution is not required. So we will say that these two forces are along x-axis, two forces along y-axis. Therefore n is equal to mg. N is equal to mg, and that is equal to weight of this is given 700 Newton. So we have not to do anything with this normal reaction because there is no relation in this. I want what? W, right? So there is a relation requires T3 and T4. So here opposite direction two forces are there and it is in equilibrium. Therefore T3 is equal to T4, and that is 175 Newton because that is already given. Therefore T3 is equal to 175 Newton. Now T3 is known. From here we can find the value of W. Suppose this equation is equation number 2. So from 2 we will get, therefore 175 is equal to 4W by 3. Therefore W is equal to 175 into 3 by 4. How much it is? If you look at, this is 525 by 4.
by 4. That is equal to 1, 4 1 ja 4, 1, 2, 4 3 ja 12, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. Answer is 131.25 Newton. So I will write, therefore W is equal to 131.25 Newton, and this is the answer. So weight of A should be 131.25 Newton, so that whole system will remain in equilibrium. There is another question. Setup ऐसा है, this is rigid support, this is also a rigid support. Two masses A and B are kept. From this side 100 Newton force is acting. It is the mass of 10 kg, this is the mass of 20 kg. So we have to find all the forces acting at contact surfaces. At this point N1 force is acting, at this N2, this is exerting for N2 on this, and same force is being exerted by this mass on A. Similarly, this is N3 and this is N4. We have to find all these N1, N2, N3 and N4. अब इसमें भी सेम चीज है, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे एंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड द सिस्टम is in equilibrium. This is important. Means here all the forces acting on this and all the forces acting on this. If we resolve it, then sigma fx is equal to 0 and sigma fy will also be equal to 0. तो अभी FBD हम बनाते हैं. FBD of A. अब A के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? 10 kg है, 10 kg mass weight is acting downward, that is 10 G. In this direction 100 Newton is applied, so it is 100 Newton. N1 is acting upward and N2 is acting in opposite direction. N2. Only 4 forces are acting. This is X axis and this is Y axis. Then sigma fx and sigma fy we can find. Therefore sigma fx is equal to 0. Means what? 100 Newton, that is 100 minus N2, that is equal to 0. Therefore N2 is equal to 100 Newton. Right? So this we got. N2 is equal to 100 Newton. Similarly N, it is N1. Right? So in sigma fy is equal to 0. Therefore that is N1 minus 100 is equal to 0. Therefore N1 is equal to 100 Newton. I have taken G as 10. G is taken as 10 meters per second square. So N1 and N2 is known. Now we will make FBD of B. FBD of B. How many forces are acting on this? If you look at, so here in this direction, this is B. In this direction, N2 is acting. This force is acting on B, right? In this direction, N4 is acting. This is N4. Downward towards the center, that is 20 G is acting. Upward, that is normal reaction. N3, normal reaction by the ground, by the surface to the mass B. Another force 50 Newton is acting with the vertical 37 degree it is making. So this is 50 Newton, right? And with vertical it is given, that is 37 degree. So vertically opposite, this will also become 37 degree. So these are the forces acting on this. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5 forces. Now these two directions if we select, then you have not to resolve these 4 forces, only resolution of this is to be done. If it is resolved in 2 directions, so in this direction force will be 50 sine 37 degree, in this 50 cos 37 degree. It is resolved. Now in this case, therefore sigma fx is equal to 0.
This implies in this direction it is N2. So N2 minus in this direction N4 and 50 sine 37 degree. So 50 sine 37 degree plus N4, that is equal to 0. Therefore, N2 minus 50 sine 37, 50 into it is 3 by 5 plus N4, that is equal to 0. 5 10 times it goes. Therefore, N2 minus 30 minus N4, that is equal to 0. Therefore, N2 is how much? That is 100 Newton, right? We have got. So 100 minus 30 minus N4, that is equal to 0, and this implies N4 is equal to 70 Newton. So we got N4 also 70 Newton. And sigma Fy we look at, and sigma Fy is equal to 0. This implies this is N3 in y direction, N3 minus 20G minus plus 50 cos 37 degrees, that is equal to 0. Therefore, N3 minus 20G, it will become 200 plus 50 cos 37 is 4 by 5. That is equal to 0. This goes 10 times. So, we'll get N3 is equal to transfer 20, 240 Newton. So, all these forces we got N1, N2, N3 and N4. So, answer will be N1 is equal to 100 Newton, N2 is equal to 200 Newton, N3 is equal to how much? 240 Newton, and N4 is equal to 70 Newton. So this is the answer, equilibrium. When this system is in equilibrium, so these are the forces which are, when the object is contact with, these are the contact forces. We can say these are the reaction or action forces for this kind of system, right?